Okay, very good morning, every student. Myself, Harsh Pratap Singh, will just take your chemical bonding lecture number 3. Okay, so welcome to our very loving batch that is Lecture Board 2023. Since this is a recorded class, so I will not be able to contact you. Okay, so if you have any doubt, you should ask personally me on the WhatsApp. Clear? So we will start this lecture number 3. Already I have covered many of the portions from this chapter. That is electrovalent bonding, okay, covalent bonding, okay, what are characteristics that I will cover today. Okay, this polar, covalent, non-polar, and this characteristic today I'll cover. And we will also move to the coordinate bond. Means this today I will make this chapter came to the end. Okay. Then we will understand, okay, we will understand the bonding, covalent bonding characteristics. Clear? So I have already told you what is covalent bond, isn't it? I hope the copy is visible to you. Okay. So covalent bonding. So this covalent bonding already I have discussed with you many times. Here I have told you what is covalent bonding. That is the compound which will be formed by mutual sharing of electron, isn't it? It is called covalent bond, and a compound which will be formed by this will be called as covalent compound, or the molecule which will be formed will be called as covalent molecule. I've told you several types of chemical bonding, that there are single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond. Single covalent bond will be represented by single dash, double will be by double, triple will be by triple. Okay, I have already told you this. So now what is covalency? That is also I told you the electron which will be taking part in the formation of bond, that will be called as covalency. Like covalency of hydrogen will be 1 because one electron will be shared by both the hydrogen. Then oxygen will be 2, then carbon will be 4. Okay, I have discussed many of the examples also like hydrogen, nitrogen, oxygen, CH4. Okay, many homeworks also are given. Now today we will try to understand. Okay, today we will try to understand few more topics from that part. Okay, and even the conditions for the formation of covalent bond, that also I have discussed. That is, both the atoms should have 4 electron or more electron in their valence shell. Then they should have high electron affinity. Then they should have high ionization energy. Then they should have high electron negativity, isn't it? And electronegativity difference between them should be zero, you can say, or we can say should be negligible, isn't it? So these are several topics that I have already discussed. There are several structures like hydrogen molecule, chlorine, nitrogen, water, carbon tetrachloride, methane, ammonia. Isn't it? These all structures I have discussed. Almost with the chemical bonding, I have came to the last part. We will discuss the properties of, for today topic, we will discuss the properties of electrovalent compounds. I will explain you the properties as well as the reason why this is going to happen. Clear? First property we will discuss about its nature. You know, electrovalent compound is having very strong electrostatic force of attraction between them. And they cannot be separated very easily because electrostatic force of attraction, because electrostatic force of attraction is very high. Since electrostatic force of attraction is very high, the compound cannot be separated easily. So that's why the first nature which is arising, that electrovalent compounds are hard solid, isn't it? Second property, they are consisting of ions. Consisting of ions means, because they have electrostatic force attraction, it means they will have positive charge as well as negative charge.
It means they are consisting ions. Clear? These are two property in case of nature. How, why this property are arising? Because of high electrostatic force of attraction between the ions, the oppositively charged ions, that is cations and anions. Clear? First nature, that is hard solid consisting of ions. Okay. Then second property we will discuss, that is boiling point and melting point. Okay, when we talk with respect to boiling point and melting point, you already know that electrostatic force of attraction between them will be very high. If electrostatic force of attraction between them will be very high, it will become very difficult to break the molecule or break the compound. When it will become very difficult to break the compound or molecule, it means large amount of energy will be required. Which type of energy? Heat energy. So when large amount of heat energy will be required, so their boiling point as well as their melting point will be high. Do you know what is boiling and melting? Boiling means changing the liquid into gas. Melting means solid into liquid. Okay, that is very clear. So because of very high electrostatic force of attraction between the molecules, okay, because of very high electrostatic force of attraction between molecules, it will become very difficult to break the bond, that is electrovalent bond. That's why the boiling point and melting point will increase. Clear? I hope it is clear to you. Next, about electricity conduction. Electricity conduction nature. So when I talk with respect to electricity conduction nature, you know electrovalent compounds are mainly existing in solid. And in case of solid, this electrovalent compound are non-conductor. Non-conductor we can say means insulator, which do not allow the current to flow through them. Clear? Okay. Then they are good conductor in their fused or molten state. I will tell you the reason. In fused or molten state, they are good conductor. I will tell you why it is non-conductor means insulator. Same reason, because of electrostatic force of attraction. Because of electrostatic force of attraction in case of solid, that is very high, that's why they do not allow the electricity to flow through them. And in case of fused or molten state, the force gets weakens. Okay, in this case the force is gets weakens. Okay, when force gets weakened in fused states, so they become mobile. Mobile means they allow the electricity to flow through them. Clear? Remember this property, it's very important for you. Okay, then coming to the next part, that is disassociation. Okay, coming to the next part, that part is disassociation. Disassociation. First, let me make you clear what is this definition of disassociation. Disassociation means when electricity will pass through compound. Okay, remember, when electricity will pass through compound, this compound will break into anions and cations. That process is called dissociation. In case of electricity chapter, okay, in case of electricity chapter, I will discuss this very in detail. That is what is dissociation, what is ionization. Clear? Here I will talk with respect to the disassociation. When the electricity will be passed through the compound, it will break up into anions and cations. Okay, it will break up into anions and cations. In which state? In molten state. Okay, in molten state, or you can say in fused state, or you can say in aqueous state. Okay, in aqueous state they will break.
Remember this, why they will break? Already I told you, because in fused or molten states, ions gets mobile. Mobile means they can move easily. And when they can move easily, they can disassociate easily. And when compounds will get the current, it will break up into anions and cations. For example, I'll tell you NaCl, when electricity will pass through this, it will break up into Na plus Cl minus. Clear? In this dissociation will take place. Okay, here's ants will dissociate. By this way also you can say electrovalent compounds are good conductor of heat. Okay, are good conductor of heat. This is another point you can discuss. Okay, so here what I want to tell you, disassociation means when any compound will receive some amount of energy, it will break up into anions and cations in their molten or fused or aqueous state. That is mainly electrovalent compound will show this property. Okay, there is a very small reason behind it. Okay, there is a very small reason behind it. What is the reason that I will tell you? Reason is that water. Okay, water. I haven't discussed, I think so. It's a polar covalent compound. Polar covalent compound means water will have a slight positive charge and slight negative charge. Polar means they will be having slight positive charge and slight negative charge. When between them slight positive charge develop, slight negative charge develop, when the electrovalent compound will mix into the water, their ions will be resulting in a slight positive charge and slight negative charge. The electrostatic force of attraction will decrease, and when electrostatic force of attraction will decrease, the compounds will get dissociate. Dissociate means they will break up into ions. Remember my words very carefully. Water is a polar covalent compound. When it will be mixing with any compound, its electronet compound property, that is electrostatic force of attraction, that is electrovalent compounds property, electrostatic force of attraction will decrease. When electrostatic force of attraction will decrease, the compound will dissociate into anions and cations. Clear? In which state? Remember, in molten, fused or aqueous state only this phenomena will happen. I hope it is clear to you. Next property we will discuss with respect to solubility. Solubility, remember, this electrovalent compounds are only soluble in water, not soluble in organic solvents. Organic solvents means the solvent which is containing carbon atom. So electrovalent compounds are insoluble in organic solvent. Next property we have to discuss, that is rate of reaction. When I talk with respect to the rate of reaction, they slow a rapid speed of chemical reaction in aqueous solution. In aqueous solution, okay, they slow a very fast speed. Why? Since ions are very free, isn't it? In different solutions, ions will be very free. They will unite each other and they will start forming the compound. So that's the rate of reaction of electrovalent compounds are fast. Okay. This is very less important. This disassociation property can make it star mark. Very important. Electricity, very important. This two property is very important. You should remember anyhow. So these are properties of electrovalent compound. One property is also, remember, electrovalent compound are good conductor of heat. I hope you don't have any doubt till here.
Next topic I will discuss, that is properties of covalent compounds. I hope my video is very clearly visible to you. Properties of covalent compounds. Let's discuss. First property here also I will discuss with respect to the nature. Okay. Sometime questions will be coming for comparison, sometime for differentiation. This type of questions will be coming. Or sometime even give reason questions are asked. Most important thing that from chemical bonding from this part, give reasons questions will be asked. Okay. Then here first we will discuss with respect to nature. You know, chemical covalent compounds, they are having weak forces, okay, between their molecules. So when they are weak, they will be mainly existing in the gases or liquid state, isn't it? They will be mainly existing in the gases or liquid state. Okay, and they will not be containing ions, they will be containing just molecules. Okay, they will be containing molecules. First property. Reason I told you, because of they are having weak forces of attraction between them. Next is boiling point and melting point. When I talk with respect to boiling point and melting point, so you can say they are having low, okay, they are having low boiling point and melting point. Why? Because of weak force of attraction. Because of weak force of attraction, they are having low boiling point and low melting point. Clear? Because to break the bond, very small amount of energy will be required. When very small amount of energy will be required, the boiling point and melting point will become very low. Clear? Okay. Third property we will discuss. The third property is electricity conduction nature. Electricity conduction nature. Okay. Electricity conduction nature, you can mainly say they are non-conductor. Non-conductor, or you can say they are insulators. It means because of absence of ions. Because of absence of ions, they are not conducting electricity in any state. Either it is solid state, or it is liquid state, or it is aqueous state, or it is molten or fused. In any state, these covalent compounds are not conducting electricity. Why? Because of absence of ions. Okay. Next property, that is ionization in solution. Ionization in solution means when you will pass the electric current. Okay. When you will pass the electric current, non-polar covalent compounds will not ionize. Non-polar covalent compounds, they do not ionize. But some compounds, they are polar in nature. Polar in nature means they will develop slight positive charge and slight negative charge. Okay, they will develop slight positive charge or slight negative charge. So they can act as an electrolyte. Some of the compounds are polar in nature and they can act as an electrolyte. Electrolyte means they will allow the conduction of the electricity. Okay, like when HCl will mix with water, it will disassociate H3O plus ion plus Cl minus ion.
Since here ionization is taking place, means compounds are getting ionized. They are not getting dissociated. It means they are not breaking. Okay, they are not breaking. They are just ionizing. It means they are just getting slight positive charge and slight negative charge. Nothing else. Dissociation and ionization have a difference. Remember, dissociation, case of dissociation, breaking of compounds will take place and they will begin converting into the ions. But in case of ionization, what is going to happen? They are just getting ionized. It means just a slight positive charge and slight negative charge is getting developed on them. Remember this. And one property, remember, covalent compounds are poor conductor of heat. Since they are poor conductor of electricity, it means they will be poor conductor of heat. Remember, non-polar covalent compounds, they do not ionize, but polar covalent compounds are ionizing, means they are getting slight positive charge or slight negative charge on them. Okay. I hope this point is clear, since this is the also most important topic from this. Next is solubility. In case of solubility, you can say they are insoluble in water, but they are soluble in organic solvent. Organic solvent means the solvent which is containing carbon atoms. Okay. Then what is the reason? Because organic solvents are non-polar and non-polar compound will dissolve in non-polar, isn't it? The next property, that is rate of reaction. So they are slow. Okay, they are very slow because old bonds will break and new bonds will form. Okay, old bonds will break, new bonds will form. Reaction will be very slow in their aqueous solution, you can see. Clear? So reaction will be very slow. You just remember this point. Ionization, one point is very important. Polar and non-polar compounds. Polar compounds will not ionize since they are, you can say, they cannot develop positive or negative charge. In class 11th you will learn the perfect reason why this is going to happen, but till now you remember only polar covalent compounds will ionize in their solution and they will be acting as electrolyte. Clear? Electrolyte means they will allow the conduction of electricity. Why? Because polar covalent compounds can develop slight positive charge and slight negative charge. Okay, this is the concept I need to tell you with respect to the properties of the compound. Next few structures I have given you as a homework. I don't know which structure I have given you as a homework, but almost I remember ammonia, that is NH3. Okay, homework part I am discussing. I have given you the question bank for this chapter, even periodic chapter also. Practice sheet have been uploaded. Book exercise, then workbook also present. So these are much more enough for the board examinations. First priority you should give to book exercise, second question bank, third practice questions, fourth workbook. Okay. Then coming to the NH3 structure, nitrogen. Nitrogen is why I'm discussing, because I need for further discussion of several topics I need this point. Nitrogen is having electronic configuration 2 5, isn't it? Nitrogen. Hydrogen is having electronic configuration 1, isn't it? So they will share how much electron? 1 electron. Since nitrogen need 3 electron, so it will take 3 hydrogen. 1 hydrogen here, 1 hydrogen here. Since it have 5 electron in their valence shell, so here 1 electron sharing will take place. Okay, 1 electron sharing will take place. After sharing, the structure will become in this format. You already know, I hope you have drawn the homework. And like this, the nitrogen is having hydrogen. It means 3 single covalent compounds will form. Orbital diagram structure also you can draw. Next, this is the thing I want to discuss.
a very important topic. Almost you can say 2 to 3 marks questions will be coming from this part. That is coordinate bond. Remember, this coordinate bond is a very important topic for you. Coordinate bond. ये भी बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बनेगा. ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये भी दो एटम्स के बीच में बनेगा. कैसे? रिमेंबर, बाय शेयरिंग a pair of electron. By sharing a pair of electron. Remember, not mutual sharing. Mutual sharing means अगर वो एक इलेक्ट्रॉन देगा then I will also give one electron. लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग होगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स कोई एक एटम शेयर करेगा, दूसरा एटम एक्सेप्ट करेगा. यहाँ पे ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, शेयर वर्ड यूज हो रहा है, ना कि म्यूचुअल शेयरिंग यूज हो रहा है. रिमेंबर दिस पॉइंट. बाई शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक कम अगर दो कंबाइनिंग एटम है तो ये जो शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये पूरा का पूरा कंप्लीटली, ओके, कंप्लीटली by one combining atom, completely by one combining atom. Okay, लेकिन it will be shared by both, but it will be shared by both. Remember this point. ये बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बनेगा, उनमें शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ए पेयर ऑफ मींस ऐसे दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर किया जाएगा कंप्लीटली बाय कंबाइनिंग एटम्स. ठीक है, बाय कंबाइनिंग एटम्स. बट ओके, बट व्हाट यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, बट दे विल बी शेयर्ड बाय बोथ. एक सिर्फ एक कंबाइनिंग एटम कंप्लीटली शेयर करेगा लेकिन दोनों यूज कर लेंगे उसको. उसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. उसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. जैसे अमोनिया का हम केस देखें तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था. नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन, नाउ इन योर माइंड द क्वेश्चन इज अराइजिंग, व्हाट इज लोन पेयर? Isn't it? Lone pair. So pair of electron which is not shared by any atom, you can say. ठीक है, lone pair. Lone pair definition you can write, that is pair of electron which is not shared. Pair of electron which is not shared, which is not shared by or with any atom. Okay, by or with any atom. ठीक है, that is called as lone pair. So नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर है. कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन. कितने लोन इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन. लेकिन कितने लोन पेयर हैं? सिर्फ एक लोन पेयर है. पेयर मतलब समझते हो ना, दो की जोड़ियां. जैसे आप लोग की दो की जोड़ियां होंगी, है ना. तो उसी प्रकार से यहाँ पे ना अमोनिया के केस में दो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में. ये याद रखिए, दो एटम्स में से एक एटम के पास अगर हम कंडीशंस की बात करें, ठीक है, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर. वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर. एलपी मींस लोन पेयर. ठीक है, एक एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए. ये वाला एटम दूसरे एटम को वही लोन पेयर कंप्लीटली शेयर करेगा लेकिन उसका दोनों यूज कर लेंगे. ठीक है, और जो दूसरा एटम होना चाहिए, अनदर एटम शुड हैव शॉर्टेज ऑफ लोन पेयर. अनदर एटम शुड हैव shortage. Is it visible? Wait a minute. Should have shortage. Should have a shortage of lone pair. Clear? Just a minute.
should have a shortage of lone pair. क्लियर? ये दो कंडीशंस बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. जस्ट अ मिनट. Okay, now it is perfectly visible. Clear? Okay. Then coming to the next thing, that a coordinate bond. Okay, that a coordinate bond. You know how can you define? The bond which will be shared by two atoms. Sorry, the bond which will be formed between two atoms. उनके बीच में पूरा शेयरिंग और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा completely by one combining atom, but it will be shared by both. That type of bond will be called as coordinate bond. Okay, that type of bond will be called as coordinate bond. ठीक है. एक बात और याद रखिए, जो एटम इलेक्ट्रॉन या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो इसको डोनर कहेंगे, और मान लेते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो इसको एक्सेप्टर कहेंगे, तो इसको एक्सेप्टर कहेंगे. और एक बात ये भी रखिए, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट कॉम्पाउंड, ठीक है, ये कोवेलेंट कॉम्पाउंड एंड आयोनिक कॉम्पाउंड दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर आयोनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है. इसी वजह से कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं. कभी कभी इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं. कि कौन सी बॉन्ड कहते हैं? को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं. इसके अब आपके सिलेबस में कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में है. ठीक है, जैसे कि पहला स्ट्रक्चर हम देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस आयन. ठीक है, कैसे H3O प्लस आयन बनता है. ठीक है, क्या इस आयन के पास लोन पेयर होगा? तो पहले देखते हैं वाटर का. हम ये वाटर और हाइड्रोजन से बना है. ये जो वाटर है इसकी बॉन्डिंग अगर देखी जाए तो इस तरह से इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं. लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस हाइड्रोजन से शेयर्ड होता है. इस तरह लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है. आफ्टर कंबाइनिंग की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, ये बताइए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? ये एक लोन पेयर नंबर 1, ये एक लोन पेयर नंबर 2. कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये बताइए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक अगर ये लोन पेयर शेयर करता है, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उस पे H प्लस चार्ज है. H प्लस चार्ज मीन्स इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है. इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है कि ये स्टेबल हो जाए? तो इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इट इज रिक्वायरिंग फॉर स्टेबल. Okay, for to be stable. So what will happen in this case? Here you can see this H2O molecule. Okay, this H2O molecule will donate its 1 electron and it will become H3O plus ion. कैसे मैं बताता हूं. इसकी शेयरिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब है, फिर भी हम देखेंगे. ये ऑक्सीजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए. ये एक बॉन्ड, इस शेयरिंग को हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस शेयरिंग को हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
ध्यान से देखिएगा, इस शेयरिंग को हम सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे इसके बाद दो लोन पेयर था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिमेंबर, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या फिर डेटिव बॉन्ड होता है उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की शेयरिंग होती है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पे ये वाला जो लोन पेयर था ये शेयर होगा, ठीक है, ये शेयर होगा, इसको भी क्रॉस कर दीजिए, ये जो शेयर होगा फिर इसको ऐसे लिखेंगे एच के साथ, ये इसकी शेयरिंग होगी, और ये पूरा इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसी स्ट्रक्चर को हम H3O प्लस आयन का स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, H3O। इसका मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन का भी है और ये हाइड्रोजन का भी। हाइड्रोजन की बात में करें तो ये दो लेके स्टेबल, और ऑक्सीजन की बात करें तो ये दो लेके स्टेबल हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है then you can ask me. If there is no problem then I will move forward. Okay, so I think this structure is very well clear to you, isn't it? इसके पीछे कई सारा रीजन है, ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दैट, यू विल स्टडी इन 11th. ओके, यू विल गेट द 11th, दैट इज डिटेल स्टडी ऑफ, ओके, डिटेल एक एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें से 3 मंथ अप्रॉक्स लग जाएंगे एक टीचर को पढ़ाने में। देयर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट वेरी डिटेल, क्लियर, you will be understanding it very detail. I hope this point is clear. How the structure of, you just remember how the structure have been formed, how the electron have been shared. देखिए, अब उसके बाद शेयरिंग के बाद भी ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है। तो बोर्ड ने कई बार क्वेश्चन पूछा H3O प्लस एंड के पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है कि नहीं बचा है। तो इस केस में आप आंसर दे सकते हैं हाँ, एक पेयर बचा है, एक लोन पेयर बचा है, ठीक है। इस केस में मैं आपको एक सेकेंड स्ट्रक्चर भी डिस्कस करूंगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस। NH4 की हम फॉर्मेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये NH4 अमोनिया से बना है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अमोनिया का स्ट्रक्चर अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था। सिंस दिस इज हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये नाइट्रो अमोनिया के पास कितने लोन पेयर, वन लोन पेयर है, ठीक है। इसके पास वन लोन पेयर है, एक प्रोटॉन आया। प्रोटॉन मींस H प्लस एंड को ऑलवेज रिमेंबर, इसको प्रोटॉन कहते हैं ना कि H प्लस एंड कहते हैं। मैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए H प्लस एंड कह रहा हूँ, इसको प्रोटॉन कहते हैं। एक हाइड्रोजन आयन मींस प्रोटॉन आया, और ये रहा अमोनिया मॉलिक्यूल। तो ये वाला जो होगा ये इसको कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, जब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे H में इसको रिप्रेजेंट कर H, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह बनेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई रहेगी, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये वाली ये जो बॉन्ड होगा इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे, इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और ये वाला जो होगा इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। इस केस में अगर देखा जाए तो अमोनिया जो था वो क्या था, डोनर था, और ये H प्लस एंड क्या था, एक्सेप्टर था। H प्लस एंड क्या था, एक्सेप्टर था। अगर आपको कोई भी दिक्कत है then you can ask me, otherwise to the very last topic of this chapter I will move on. Okay, formation of ammonia, sorry, formation of NH4 ammonium ion and hydronium ion। सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में है जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। इसको यू हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। एक हाइड्रोक्सिल आयन का होता है OH माइनस का, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर योर होमवर्क पार्ट। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर योर होमवर्क पार्ट। So I have completed all the portions from this chapter. Okay, I think some people have doubt. Okay, now I will take doubts from my side. जो मेरी तरफ से बच्चों को डाउट, मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को डाउट आ सकता है, मैं उसको यहाँ पे एक बार और डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा, दोबारा नहीं बताया जाएगा। एक स्ट्रक्चर में भी आपके सामने आएगा C2H4 जिसका नाम होगा इथीन। एक स्ट्रक्चर आएगा C2H2 जिसका नाम होगा इथाइन।
ये आपको पता है आई थिंक। जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखा जाए कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है लेकिन इसके पास 4 हाइड्रोजन है। तो क्या 2 हाइड्रोजन इसको दे दे, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको। इस कार्बन की कितनी बॉन्ड बची? 2 बॉन्ड बची। इस कार्बन की कितनी बॉन्ड बची? 2 बॉन्ड बची। इनमें डबल बॉन्ड बना दो, काम खत्म। C2H4 इथीन। C2H2 देखा जाए, 2 कार्बन, एक एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, कितनी बॉन्ड कार्बन की बची? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। 4 बॉन्ड बना सकता है, मीन्स 3 बॉन्ड बची, तीनों बॉन्ड इसके बीच में बना दो, काम खत्म। है ना? तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीनों टॉपिक क्लियर इससे। आई थिंक हो गया होगा। मैंने, आई डोंट नो मैंने डिस्कस किया था कि नहीं, पोलर कोवेलेंट कॉम्पाउंड। ठीक है, पोलर कोवे अभी मैंने प्रॉपर्टी में डिस्कस कर दिया है मैक्सिमम पार्ट। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? ये वाटर में आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, ये वाटर में आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज मींस उस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, स्लाइड निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप 11th में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे कुछ कंपाउंड जानना है कि वो पोलर है कि नहीं पोलर है। ठीक है, और नॉन पोलर अगर है तो वो आप कह सकते हैं वो वाटर में आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, नॉन पोलर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली होता है। लेकिन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में वो इक्वली नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी चीजें जहां मुझे पता है मैंने सारी चीजें परफेक्टली बता दी हैं। एक पॉइंट और देखिए, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस डेल्टा ईएन मींस EN2 माइनस EN1। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है दो एटम्स के बीच में तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो पोलर होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आई थिंक सबको पता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो कंपाउंड जो फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा वो पोलर होगा। अगर सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है, सेम डेल्टा ईएन का है तो नॉन पोलर होगा। अगर स्लाइटली डिफरेंट है तो पोलर, और बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस है तो आयोनिक। इसको एक बार फिर से बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर डेल्टा ईएन सेम है दोनों का तो ठीक है, तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो नॉन पोलर होगा। अगर डेल्टा ईएन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो पोलर होगा। अगर डेल्टा ईएन लार्ज है, लार्ज डिफरेंस है, तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो आयोनिक होगा। और ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव आता है, स्लाइड निगेटिव, तो ये पॉजिटिव पोल्स हो जाता है, ये निगेटिव पोल्स हो जाता है। और जो मॉलिक्यूल के पास होता है उसी को हम डाईपोल मॉलिक्यूल कहते हैं, डाईपोल मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे HCl आप कह सकते हो, इस पे H पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, Cl पे डेल्टा निगेटिव आ जाता है। ठीक है, एक केस वाटर में भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में, डाइपोल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से उनका मिस चीजें होती हैं। और होमवर्क की बात कर लेते हैं, आप लोग को होमवर्क में करना क्या है। होमवर्क पेज 35, 36, 32, 25, 26 प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस
plus workbook. Thank you.